See, normally the definitions are mentioned in section 2, but this is a definition which is going to create a charge on a GST, and therefore this particular definition is covered in section 7. So what we are going to learn today is what is the meaning of supply and how for each and every transaction you need to check, you need to verify that whether that particular transaction is qualified to be treated as a supply or not. Because if a particular transaction does not qualify to be treated as a supply, then there will be no question of levy of GST. GST would be levied only and only if a transaction turns out to be a supply. So what first we will do? First we will go through the whole definition. We will try to understand the framework of the definition, and then we will understand each and every subsection, proviso, explanation, whatever has been given, and associated definitions in relation to this definition of supply. So let's say I'm reading it first of all. Everyone please page number 2.4 we are doing. Section 7, meaning and scope of supply. Let's see what is this meaning and scope of term supply. I'm reading it. Up broadly अगर हम देखें ना तो section 7 has been split into 4 subsections. 7.1, 1A, 2 and 3. See, this is how I always used to understand any section, that how this particular section has been framed. So the whole section of term supply has been segregated into 4 subsections: 1, 1A, 2 and 3. Let's see what is mentioned in the term 7.1. I'm reading it now. Just bare reading, nothing else. 7.1. Supply includes, so I will always have a pen or pencil in your hand, so whenever I'm highlighting something, you must highlight it and summarize it. I have given dedicated blank pages, it is not by mistake which we have given. So whatever you want to summarize, तो आगे देखोगे तो मैंने blank पेज जो रखे हैं इसीलिए रखे हैं. अब पीछे भी घुमाओ 2.6 पे भी आओ तो भी मैंने सप्लाई के रिलेटेड ही कुछ टर्म्स हैं जिसके लिए मैंने बहुत सारी जगह पे ना ब्लैंक स्पेस छोड़ी हुई है so that you can mention it. So जहां जहां मैंने स्पेस ज्यादा छोड़ा हुआ है that is not formatting error, that is specifically for you so that you can mention whatever you want to write down over there. Fine. So please pay attention to 7.1. 7.1. Supply includes. Then we have A, B, and C. Supply includes clause A. So 7 is a section, 1 is a subsection, A is treated as a clause. 7.1A. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of the business. 90% of the transaction will fall in 7.1A. 90%. जितने ट्रांजैक्शन सप्लाई क्वालिफाई करते हैं ना उसमें से 90% ट्रांजैक्शन विल फॉल अंडर 7.1A.
Just a bare reading, that's it. No interpretation as of now. तो ये पहली चीज हो गई. That supply includes all the forms of supply of goods or services or of both, such as sale, transfer, barter, exchange, licensing, renting, leasing, disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of the business. Okay. B. So again, I start when I'm reading with B. Supply includes importation of service for consideration, whether or not in the course or furtherance of the business, and then there is a C, activity specified in Schedule 1 made or agreed to be made without consideration. तो ये हमारा 1A, B और C हो गया. 1 के अंदर मैंने बोला था कि 90% ट्रांजेक्शन यही फॉल होंगे. उसके बाद B आया, importation of the service for a consideration may or may not be for furtherance of the business. Then we have a C where they say that whatever we have mentioned in Schedule 1 will be treated as a supply even without consideration. Okay. No interpretation, just try to understand what has been mentioned. Then we have 7.1a. 7.1a, what it says, D has been omitted from retrospective effect, but the notification came in January 2019. Basically, this 1a is nothing but 7.1d itself. तो 7.1d का जो प्लेसमेंट था उसको 7.1d से हटा के 7.1a में लेके आया है और कुछ नहीं किया है. ऐसा क्यों किया है वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे. So what is there in 7.1a? Where certain activities or a transaction constitute a supply in accordance with the provision of subsection 1, they shall be treated either as a supply of goods or supply of service as referred in Schedule 2. I don't know what you understood, but I'm not going to explain anything as of now. एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जो आपको क्लियर अंडरस्टैंड नहीं हुआ है. So don't worry, just plain reading as of now. So that is my 7.1a. क्या बोला? Shall be treated, any transaction shall be treated as a supply of goods or a supply of services. Which transaction? The transactions which are mentioned in Schedule 2. Fine. Then we have a 7.2, third subsection. Notwithstanding anything contained in subsection 1, notwithstanding anything contained in subsection 1, clause A, activities or transactions specified in Schedule 3 or such activities or transaction undertaken by central government, state government or any local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendation of the council. Council now I understand. I hope you also understand. On the recommendation of the council shall be treated neither as a supply of goods nor as a supply of service. तो यहाँ पे कुछ बात हो रही है कि भाई इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. So that was 7.2. Coming on 7.3. Subject to subsection 1, 1a and 2, government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transactions that are to be treated as a supply of goods and not as a supply of service, supply of service
and not supply of goods. So basically ये है हमारा पूरा section 7. So if we need to understand what is there in section 7, just for the purpose of understanding, so this whole section 7 has been split into 4 parts. The first one is 7.1. Within that there is A, B and C. So यहाँ पे है supply includes करके पूरा. Then we have 7.1A. Then we had 7.2 and then 7.3. Basic framework we are trying to understand. 7.1A ने क्या बोला? It includes all the form of supply of goods, or you can say services, for a consideration by a person in the course or a furtherance of the business. This is something major condition which we can say. So the normal transactions are getting covered here, and this is import of service with consideration. सेकंड में ये मेंशन किया हुआ है बी में. Then what C says is about schedule 1. तो यहाँ पे schedule 1 का कोई रेफरेंस दिया था. 7.1A के अंदर there is a reference of schedule 3. 7.2 के अंदर there is a reference of schedule 3 and गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में कुछ बात कर रहे हैं. हाँ, गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं. एंड लास्ट में किसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, किसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, वो गवर्नमेंट हमें नोटिफाई करके बता सकते हैं. ये बेसिक से फ्रेमवर्क है, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा इंप्रूव भी करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, whenever we are talking about GST, whenever we are talking about GST, what is a GST? It's a goods and services tax. So basically this is a tax which is levied on supply of goods or a services or both. It seems from the name that this is levied on both. कोई फर्क नहीं पड़ता उसको कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर हम अर्लियर रिजीम की बात करें, जो हमने अंडरस्टैंड किया था बहुत अच्छे से, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन अर्लियर रिजीम में सप्लाई या फिर आपके मान के चलो सेल ऑफ गुड्स होता, तो उस पर लगता क्या? वैट, जीएसटी, रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अगर वो ट्रांजैक्शन होता सप्लाई ऑफ सर्विस का अर्लियर रिजिम में, उस पर लगता क्या? सर्विस टैक्स, रेवेन्यू होता सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो पहले वो फाइट थी कि इसे हम गुड्स माने या इसे हम सर्विसेज माने. बट नाउ देयर इज नो सच फाइट, बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर वन हेड, वन रूफ, that is a GST. So prima facie it seems that there is no reason why we should classify any particular transaction as a supply of goods transaction or as a supply of service transaction. मतलब क्या? अगर कोई transaction है like sale of software, तो अब उसे हम goods का सप्लाई माने या सर्विस का सप्लाई माने, वो क्लासिफिकेशन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज व्हाट वी फील, बट दैट एक्चुअली इज नॉट द केस. दो द नेम ऑफ द टैक्स इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
still classification that whether that particular supply is a supply of goods or is it a supply of service, that is still very important. क्योंकि हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे लॉ में आपको पता चलेगा that there are certain provisions which are applicable for supply of goods only. There are certain provisions, there are certain principles, there are certain procedures which are applicable to supply of services only. And there are certain provisions which are commonly applicable to both supply of goods as well as supply of service. So पूरा लॉ भले एक ही बनाया गया है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में क्लासिफिकेशन करना अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो वेन एवर यू आर थिंकिंग ऑफ charging a tax on a particular transaction, still you have to come through that route that whether a particular transaction is a supply of goods transaction or is it a supply of service transaction. आपको आज भी वो डिसाइड करना होगा कि क्या ये ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांजेक्शन है या फिर ये सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन है. दैट डिसीजन येट टू बी मेड. व्हाई? बिकॉज there are certain provisions, as I told you, are applicable to only supply of goods, not applicable to supply of service. There are certain provisions which are applicable to supply of service, not supply of goods. So even a rate of tax, so the rate at which we need to pay on goods is not the same rate at which we need to pay on services. There is something called a time of supply principle. आर अ सेपरेट. टाइम ऑफ सप्लाई मतलब व्हेन यू नीड टू पे टैक्स. अभी तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं कि पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज अ सप्लाई ट्रांजैक्शन और नॉट. दैट्स इट. एक बार वो सप्लाई हुआ तो हमारी प्राइमा फेसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की, लेकिन हमें वो टैक्स कब पे करना है वो वापस डिपेंड करता है कि वो ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन है. तो वो क्लासिफिकेशन वहां पे भी चाहिए हमें. Not just that, even to identify the nature of the supply. Once it is a supply, then we need to find out the nature of the supply. What is the meaning of nature of the supply? Nature of the supply means whether the supply is an interstate supply or an intrastate supply. Because then we need to decide that whether I need to pay CGST, SGST or I need to pay IGST. So even to decide whether a transaction is an interstate supply or an intrastate supply, meaning thereby to decide the nature of the supply, still the provision to decide the nature of the supply are different for goods, different for services. So within a law, though there is a common law for goods as well as services, but there are internal clear-cut different provision for goods, different provision for services. So for any particular transaction, you always need to identify that whether the transaction is a supply of goods transaction or is it a supply of service transaction. The first thing, because if you have observed, no, 7(3), तो वहां गवर्नमेंट ने बेसिकली किया क्या है? 7(3) में अगर आपने देखा हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया? That government has the right to identify any particular transaction as a supply of goods transaction. अभी ऐसा गवर्नमेंट राइट कब एक्सरसाइज करेगा? जब कंफ्यूजन है. कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन है, कुछ लोग समझ रहे हैं ये सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन है. तो वहां पे गवर्नमेंट हैज अ राइट टू डिसाइड दैट दिस ट्रांजैक्शन, इवन दो यू फील दैट इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, बट वी आर सेइंग इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड यू ट्रीट इट एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स. आर यू गेटिंग? और देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन वेयर यू फील दैट इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन, बट वी नो दैट इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन एंड वी नोटिफाई द ट्रांजैक्शन एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन. So you please apply the principle as if it is a supply of service. So it is not supply of goods or a service. It is the supply of either goods or supply of service. I don't know why they have used the word both always. Maybe in a context with there are certain transactions where in the same transaction both the things have been applied. For example, if you purchase an air conditioner, it comes with an installation.
So there's a supply of goods as well as some portion of the service also. So it's a both. In that way they probably have used. Otherwise both have no separate classification. That what we need to do if there is both. No, both has been taken care very clearly in section 8. इसके बाद जो section है section 8 में ये both के लिए ही section है ये. Section 8 इसके बाद हम पढ़ेंगे. Composite supply and mixed supply वाला. Am I clear? So the first point before we start understanding is, now though we are entering into a common text for goods and services, but still within that, देखो एक घर है जिसके अंदर ना एक फैमिली रहती है, लेकिन 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो सबके रूम्स अलग ही है. सो अंदर जाके तो वो क्लासिफिकेशन ही हो रहा है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन है या सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन है. जहां जहां कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन थे, जहां जहां कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन थे, कंफ्यूजिंग ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि हमें पता नहीं चल रहा है, या फिर पहले दिक्कत थी कि इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने, वहां गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया है बाय वे ऑफ शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 है इसलिए टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द ट्रांजैक्शन इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन और सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रांजैक्शन. तो हमें क्लियरली बताया गया है. एम आई क्लियर? श्योर. सो नाउ लेट्स अगेन स्टार्ट विद 7.1. द फर्स्ट थिंग, प्लीज क्लोज द डोर. The first point which you always need to observe whenever you are reading a definition. What is the meaning of definition? Let's understand the definition of the definition. What do you mean by definition? Definition means you are trying to conclude some meaning of some term. And when you try to understand or try to conclude the meaning of some term, that has to be very clear. That has to be very clear. So if I am telling you to define cow, then you will say that cow means an animal with certain this characteristics, whatever you define. Are you getting it? Basically the point is, when we are talking about a definition start with this sort of terminology. अगर उनको सप्लाई का डेफिनेशन देना होता, क्लियर डेफिनेशन देना होता, तो कैसे स्टार्ट होता? सप्लाई मीन्स, उसको डेफिनेशन बोलते हैं ना. यहां पे क्या है? सप्लाई. नाउ व्हाट डज दैट मीन? That means this definition is an inclusive definition. What does that mean? This definition is inclusive definition. So whenever you come across any definition which is an inclusive definition, meaning thereby whenever definition starts with this sort of terminology that supply includes or this includes. So when I say that define India, then there is a meaning of an India, no? There is a meaning. A meaning is a specific. लेकिन यहाँ पे start हुआ है supply includes. The first, still we are not going into it. So what is the understanding of the term called supply includes? That means we are not keeping the boundaries. Means in boundary. Hello? So when you purchase a land and someone is asking you, તમારી જગ્યા કઈ છે? So you will say that this wall, જેટલી તમને દેખાય છે wall, એની અંદરની જગ્યા મારી જગ્યા છે. That is a boundary within which you can do whatever you want to do, because you created that boundary by term called a means. Means, but you cannot cross that boundary. Hello? But when they use the term called as includes, what does that mean? That means whatever you understand supply is a supply, in addition to it, it also includes this.
I don't know what you understand. So whenever I say that, no, government intentionally keep certain areas as a gray area. अगर they were very clear कि ये जो उन्होंने डिसाइड किया है 7.1.1a 2 and 3 में उसको ही उसको सप्लाई मानना था, तो why they didn't start with the term supply means? अगर उनको डिफाइन ही करना था ना, तो सप्लाई मीन्स क्यों नहीं लिखा? क्योंकि they do not want to restrict the levy of GST to only section 7. And 7, that is a term supply, is a much larger term. That is what they are saying. So I don't know what you understand as a supply, but whatever you understand as a supply is a supply. But it should include this. So whatever you understand as a supply and you want to pay tax on it is a supply. Are you getting what I'm saying? But it also includes this. So if whatever you understand as a supply includes this, no, then it's fine. But whatever you understand as a supply does not include this, then please include this. Hello? Sure. Am I clear? So that is the first very important point to understand whenever you start reading the definition. No? Whenever you read definition, the first point which you should always observe is how it starts, whether it is an inclusive definition or exhaustive definition. So whenever it starts with the term called an means, no, it's an exhaustive definition. That means हम जो बोल रहे हैं वही supply है, जब वो means से start होता. अब ये जब include से start हो रहा है तो क्या मतलब हो गया उसका? I don't know what you understand, but whatever you understand supply is a supply. It also include this. Am I clear? लेकिन जब हमें बोला जाएगा कि what you understand as a supply is a supply but it also includes this, so what I'll say, I don't understand anything as a supply. I don't understand anything as a supply. Fine, then it includes this. Are you getting? So आप अगर बोलोगे ना मुझे सप्लाई क्या है पता ही नहीं है, according to me nothing is a supply. Why should I say that supply is something? So I say that supply is nothing is called as a supply. Then they will say that okay fine, according to you supply is 0, but it should include at least this. At least this. अब समझ में आया? At least. जब means होता ना तो only होता. अगर term means लिखा होता तो supply means only this. Includes है तो उसका मतलब क्या हो गया? Supply includes at least this. At least. Are you getting what I'm saying? Sure. So supply includes, तो वहीं से start हो गया. अब एक चीज मुझे बताओ before I go into the clause, because once I enter into the clause, then coming out of that clause will I think take 1 or 2 lecture. I'll ensure कि मैं बहुत ज्यादा उतना डीप में ना जाऊं, एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन करें, बिकॉज ये 7.1a पे ही मैं एक हफ्ते तक बोल सकता हूँ. लेकिन I will not discuss in that because we have many other things to do also. और एग्जाम उतना नहीं पूछते हैं, 7.1a पे पेपर नहीं आने वाला है. What do you mean a supply as a term? Supply क्या term है? Is it an inward term or is it an outward term? Outward term मतलब क्या? Outward supply के बारे में बात हो रही है, inward supply के बारे में बात हो रही है. हाँ, किसकी बात हो रही है? Outward, no? What is 7.1b? Now you understand? So if you have myth in your mind, now understand why there is an includes. That if you have myth in your mind that the supply is an output terminology, then please keep that terminology with yourself, because immediately 7.1b comes and which says that supply is also an inward terminology on which you probably need to pay. Otherwise, we normally understand that the supply is an outward terminology or an output terminology where you are giving something. और एकदम नॉर्मल सप्लाई, अभी देखो इसीलिए ना ये नया टर्म लेके आया क्योंकि पुराना था एक मैन्युफैक्चरिंग,
जिसपे एक्साइज लगता था, फिर था सेल जिसपे वैट CST लगता था, फिर था प्रोविजनिंग ऑफ द सर्विसेज जिसपे सर्विस टैक्स लगता था. So they cannot use an earlier terminology. They have to come up with some new terminology, which is very vast terminology, and someone's created the name called in supply. But I'm telling you, only supply is of no use unless until supported by goods or services. Because ultimately GST is a tax which is levied on goods or services. So only a supply without goods, without services is of no use. So therefore, when you read, supply includes all forms of supply, लेकिन अकेला नहीं, of goods or services or both. So therefore, we need to understand the term goods as well as services. What is the meaning of goods? What is the meaning of services? हेलो, क्योंकि अगर particular transaction fulfill the conditions of a supply but does not qualify to be treated as a goods or a service, then still there is no levy. Why? Because अकेला सप्लाई पे कुछ नहीं हो रहा है. लेवी किस पे होती है? सप्लाई पे नहीं होती है. लेवी होती है सप्लाई ऑफ गुड्स पे, लेवी होती है सप्लाई ऑफ सर्विस पे. So if any particular article, material, substance does not qualify to be treated as a supply of goods, or any article, material, or substance does not qualify to be treated as a goods, तो मायने ही नहीं रखता है फिर वो सप्लाई है या नहीं है, क्योंकि जीएसटी लगता किस पे है? सप्लाई पे नहीं लगता है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है, सप्लाई ऑफ सर्विस पे लगता है. तो whether a particular transaction is a supply of goods or a supply of service, that identification is very important, and therefore we need to understand what is the meaning of goods, what is the meaning of service. Good part is, in an earlier regime, in an excise, I am saying, there was no definition of the goods. Can you believe? Excise was levied on the manufacturing of goods, and there was no definition of goods. But the good part is, here in section 2, they have defined what is the meaning of goods. They have defined what is the meaning of service. So let's go back to the first chapter, definition part. Page number 1.10, section 2, subsection 52. Page number 1.10. All the definition I have kept at one place intentionally, so that whenever we are doing any particular chapter and we need to understand the meaning of some term, it should be available with us, rather than keeping everything in chapter again and again. What is the meaning of goods? अब देखो, goods के पीछे क्या include लिखा है क्या? लिखा है ना, बहुत क्लियरली मीन्स, उसी को तो डेफिनेशन बोलते हैं. आई एम रीडिंग इट फर्स्ट एंड देन विल ट्राई टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स. नॉर्मली गुड्स क्या होता है? एनी आर्टिकल, मटेरियल, सब्सटेंस व्हिच इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट और हैविंग अ मूवेबल एज वेल एज मार्केटेबल, देन सच आर्टिकल, मटेरियल, सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ गुड्स. लेकिन लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन. गुड्स मीन्स every kind of movable property other than money and security, but includes actionable claim, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land which are agreed to be served before supply or under a contract of supply. कितना छोटा सिंपल डेफिनेशन है, सबको समझ में आ जाना चाहिए. Again, goods means every kind of
यू हैव नो अंडरस्टैंडिंग नो, प्रॉपर्टी वर्ड यूज किया है। प्रॉपर्टी वर्ड आप मूवेबल के लिए कभी यूज करते हो क्या? ये प्रॉपर्टी जो वर्ड यूज किया ना, उस पे 3 घंटे बहस हो सकती है। What do you mean by property, first of all? Because when I say that I have this much property, that ideally means an immovable property. And when you say that movable property, that movable property also includes an intellectual rights. Hello? So that is again debatable, but we are not going into it because at that level they are not asking to you. We just simply need to understand. Goods means every kind of movable property. Then they excluded something. तो basic fundamental principle क्या था उनका, कि उनको रखना था क्या, सिर्फ movable property को ही. So they started with this. It means movable property. तो अगर कोई पूछे कि definition क्या है goods का, तो definition तो छोटा सा इतना ही है, क्या goods means movable property. लेकिन जब भी कोई डेफिनेशन लॉ के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, तो आपने हर बार देखा होगा दैट इट ऑलवेज कम्स विथ इन इंक्लूजन्स एंड द एक्सक्लूजन्स. हेलो, इट ऑलवेज कम्स विथ इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स. नाउ व्हाई इट इज लाइक दैट? अब देखो क्या है, अब ध्यान से देखो मैं जो क्या दिखाना चाहता हूं आपको. आपको लगेगा ये तो 3 पेज हम रट्टा मार लेंगे, खत्म हो गई बात. डोंट लुक इन दैट वे. अगर मैं बोल रहा हूं उस तरीके से देखोगे ना, तो कभी रट्टा ही नहीं मारना पड़ेगा. गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, सो एक्सक्लूजन स्टार्ट हुआ, मतलब दिस डज नॉट मीन्स गुड्स, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज. अब समझ में आ रही है बात कि जो प्रॉपर्टी बात हो रही थी ऊपर, जो मैं बोल रहा था that property also includes an intangible rights into something. Securities are not a tangible. It's an intangible right. So even an intangible right which you cannot touch. So whatever myth which you have in your mind that goods means something which you can touch is not a goods. Hello? Goods means even an intangible things. It is always does not mean intangible thing. Because security they have excluded, meaning thereby. Hello? Securities they have excluded intentionally. So क्या हो रहा है? Supply means every kind of movable property other than money and security. So उसको exclusion में रखा. लेकिन फिर inclusion लेके आए. But includes actionable claim. अभी actionable claim is also an intangible items. It's not a tangible item. What is the meaning of actionable claim? आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन बहुत सारी जगह डेफिनेशन ऐसी वैसी होती है ना कि आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा. देखो, कम ऑन फर्स्ट डेफिनेशन इटसेल्फ ऑन पेज नंबर 1.1. एक्शनेबल क्लेम का मतलब इतना अच्छे से समझाया है ना आपको कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. पेज नंबर 1.1 फर्स्ट डेफिनेशन. एक्शनेबल क्लेम shall have the same meaning as assigned to it in section 3 of transfer property. तो किसने देखा है ये प्रॉपर्टी एक्ट खोल के? This is the definition. They can understand. I'll explain you what is the definition, but I don't want to go into that as of now. सिर्फ आप समझो the framework of the definition. जैसे ये framework है ना, ऐसा definition का framework समझो पहले. बाद में हर एक टर्म का अच्छे से हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अच्छे से उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, और इतना इंटरप्रिटेशन करेंगे कि डेफिनेशन याद रखना विल नेवर बी एन इश्यू टू यू. जो कि हर बार होता था मेरे को जब पढ़ाई करता था ना मैं, तो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता था डेफिनेशन को याद करना, बिकॉज वहां आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते. समथिंग व्हिच हैज बीन डिफाइंड इन अ लॉ इज डिफाइंड इन अ लॉ. यू हैव नो लिबर्टी टू शो योर क्रिएटिविटी ओवर दैट. यू कैन हैव योर इंटेंशन और इंटरप्रिटेशन, बट डेफिनेशन अगर पूछते हैं तो वहां हम क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, क्योंकि लॉ ने कुछ डिफाइन किया है, तो आपको वही लिखना है. तो वो मेरा पर्पस होगा कि हम उतना डिटेल में अंडरस्टैंड करें ना, तो डेफिनेशन आप खुद ही अंडरस्टैंड कर जाओ, याद करने की फिर जरूरत नहीं रहेगी. क्या फ्रेमवर्क है? गुड्स मींस करके चालू किया एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी.
whatever comes in your mind, every kind of movable property is goods. फिर exclusion आया, फिर inclusion आया. पहले क्या आया? exclusion आया, फिर inclusion आया. तो सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन ना हर बार हर जगह पे सप्लाई की डेफिनेशन में भी है इंक्लूजन एक्सक्लूजन. तो ये होता क्यों है वो पहले अंडरस्टैंड करें. तो वो एक बार प्रिंसिपल हमने अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आपको लाइफ लॉन्ग ना एक्सक्लूजन इंक्लूजन का पर्पस समझ में आ जाएगा. पूरा अंडरस्टैंडिंग या फिर देखने का नजरिया बदल जाएगा. एक्सक्लूजन कब होता है? जब प्राइमरी जो उन्होंने डेफिनेशन दी दैट गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे उन्होंने बहुत वास्ट कवरेज कर लिया. लेकिन लॉ डू नॉट वांट टू इंक्लूड सर्टेन थिंग्स इवन दो इट इज क्वालिफाइंग टू बी ट्रीटेड एज गुड्स. अगेन व्हेन आई से दैट गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो मनी or you can say coin is a movable property or not? Yes, but they do not want to include money as a goods. But when you see by way of a definition, अभी definition तो इतनी छोटी ही है, बाकी सारे inclusion exclusion ही है. So अगर goods के definition को बोले तो क्या है? Goods means every kind of movable property. That's it. Whatever is there is exclusion and inclusion. The remaining part is exclusion and inclusions. So when you just understand goods as a every kind of movable property, that includes so many things, and that also includes money. When a definition includes certain things which government do not intend to include, गलती से वो include हो गया क्योंकि हमारी definition वैसी थी, तो उनको specifically exclude करना पड़ेगा. हेलो, अगर मेन डेफिनेशन जो हमने डिफाइन किया गुड्स को, वो डेफिनेशन की वजह से अगर कोई आर्टिकल, मटेरियल, सब्सटेंस, मनी इज क्वालिफाइंग एज अ गुड्स बट गवर्नमेंट डू नॉट इंटेंड टू चार्ज टैक्स ऑन इट, गवर्नमेंट डोंट क्यों उसको गुड्स नहीं बनाना है? बिकॉज गवर्नमेंट डोंट वांट टू चार्ज टैक्स ऑन अ मनी, देयरफॉर दे स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. वरना स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करने की जरूरत ही क्या थी? अगर मनी डज नॉट क्वालिफाई टू बी ट्रीटेड एज ए गुड्स तो फिर उसको एक्सक्लूड करने की क्या जरूरत थी? अभी किसी को एक्सक्लूड कब करना पड़े? जब वो अदरवाइज कवर हो जाता था. वरना डेफिनेशन की टर्म में अगर देखो तो मनी कवर हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट डू नॉट इंटेंड टू इंक्लूड इट, देयरफॉर दे एक्सक्लूडेड इट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Sure. And same is the case with the securities, because what they have said is a goods means every kind of movable property, and when they talk about a property anything which is movable. So movable property means what? Anything which is capable of movability, having a characteristics of movability. So आप ये movability को भी कैसे चेक करोगे? और वैसे ही inclusion आया. inclusion भी क्यों होता है? inclusion क्यों होता है? exclusion क्यों था? एक्सक्लूजन इसलिए था कि नॉर्मल डेफिनेशन की वजह से ये दो चीजें गुड्स बनती है जिसे हमें नहीं बनाना है. हेलो, नॉर्मल डेफिनेशन क्या था? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो ये डेफिनेशन की वजह से ये मनी एंड द सिक्योरिटीज वेर बिकमिंग गुड्स व्हिच गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू इंक्लूड, सो दे हैव एक्सक्लूडेड इट स्पेसिफिकली. तो इंक्लूजन क्यों होगा? इंक्लूजन इसलिए होगा कि ये डेफिनेशन में ये कवरेज नहीं आ रहा है भाई, और हमें स्पेसिफिकली उसको खींच के लाना है अंदर. तो इंक्लूजन में क्या है? एक्शनेबल क्लेम. इंक्लूजन में है क्या? एक्शनेबल क्लेम. दूसरा क्या है? ग्रोइंग क्रॉप्स. अभी वो इमूवेबल कोई उसको इंटरप्रेट कर लेता, बिकॉज दैट इज अ growing crops are something which is attached to an land and land is an immovable. So someone might say that it is an immovable. So if before someone interpret wrongly, government specifically came and said that okay fine, don't misunderstand us. Even though
What is meaning of actionable claim and why they included? You want to understand? Please come on page number 2.12. पेज नंबर 2.12 पे आओ. दिस इज शेड्यूल नंबर 3. ये वाला शेड्यूल. पेज नंबर 2.12 पे आओ. एक्सटर्नल क्लेम वहां पे क्यों लिखा है ना, वो पेज नंबर 2.12 से पता चलेगा. शेड्यूल 3 लिखा है. व्हाट इज शेड्यूल 3? Schedule 3 is an activity or transaction which shall be treated neither supply of goods nor supply of service. मतलब क्या उसका? इसे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा. मतलब क्या? ना ही इसे गुड्स माना जाएगा ना ही इसे सर्विस माना जाएगा. ऐसा बोला यहाँ पे शेड्यूल 3 में. अब शेड्यूल 3 की लास्ट सेंटेंस देखो 6 नंबर की. क्या लिखा है? समझ में आया? लेकिन पूरा पढ़ो. अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग. मतलब क्या? वापस आ जाओ डेफिनेशन पे हमारा. पेज नंबर 1.10 वापस आ जाओ. एक जगह पे उन्होंने बोला, जहां पे बोल दिया एक्शनेबल क्लेम इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन पूरे को हटाना नहीं था. लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग्स पे उनको जीएसटी चार्ज करना था. अब समझ लो पहले एक्शनेबल क्लेम होता क्या है. एक्शनेबल क्लेम मीन्स योर राइट टू क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या होता है? योर राइट टू क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ फ्रॉम समथिंग, फ्रॉम समवन. सो बीइंग अ पार्टनर ऑफ एन ASMN कंपनी, if I decide to resign as a partner, then I have a right in each and every property of an ASM. Are you getting? And if they are not giving me, I have a right to claim it in the court of law. Actionable claim. It is not a mortgage which is happening. Mortgage नहीं किया था मुझे. बैंक से आप जो लोन लेते हो ना, वहां पे mortgage होता है. Mortgage नहीं है यहाँ पे. हेलो, लॉटरी के अंदर भी आपको कोई गारंटी नहीं है. आपको कोई mortgage करके नहीं देता है. वो तो बोल रहे हैं हम आपको देंगे, उनको बिजनेस करना है इसलिए वो देते हैं. वहां पे भी कोई मॉर्गेज करके नहीं देता है आपको कि नहीं आपको इतना तो मिलेगा ही. अगर हम नहीं देते लॉटरी का आपका विनिंग अमाउंट तो आप मेरी प्रॉपर्टी आके ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं देता है ना. अनदर एग्जांपल इज एन इंश्योरेंस क्लेम. वट एवर मेडिक्लेम और लाइफ इंश्योरेंस क्लेम यू आर पुटिंग ऑन एन इंश्योरेंस कंपनी इज नथिंग बट अ एक्शनेबल क्लेम. योर राइट टू क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ विदाउट mortgage. Lottery, betting, gambling, all those things, your right to claim. So अगर आप मैच पे सट्टा कर रहे हो, आप पैसा जीते, तो जो बुकी होता है वो आपको पैसा देगा, आप जितना जीते उतना. अगर वो नहीं दे रहा है ना, तो उसने कोई आपको मॉर्गेज करके नहीं दिया होगा. Are you getting? और अगर वो betting is legal in our country, then you can claim that I won this much money. अमिताभ बच्चन चेक साइन करके दे देता है. अगर वो नहीं क्रेडिट होता है पैसे, वो बता रहा है ना ये आ गया आपके खाते में, ऐसे थोड़ी ना. टीडीएस कौन करेगा भाई? वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है. तो अगर वो पैसा नहीं आता है तो यू कैन क्लेम कि ये मैं जीता था लेकिन ये दे ही नहीं रहे, लेकिन वहां पे वो मॉर्गेज नहीं है. सो दैट इज अ राइट टू क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सिंपल एज दैट. अभी राइट टू क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज अ इंक्लूजन इन गुड्स. Hello, actionable claim, the whole thing is intangible. The right is an intangible terminology. It is not a terminal, it is not a tangible terminology. ये 3-4 बार मेरे को सुनोगे, 3-4 बार समझोगे, 3-4 बार पढ़ोगे ना, तब जाके आपकी ना चांस थोड़ी सी अंदर डूबेगी. जब तक जो पढ़ रहे थे ना, अभी तो हमने पहला दरवाजा देखा है, खोला भी नहीं है. सप्लाई. और वहीं पे बहुत सारे सिस्टम या ट्यूबलाइट्स मुझे चालू में ऑन ऑफ दिख रहे हैं. लेकिन ये मल्टीपल टाइम में जैसे रिपीट करता जाऊंगा ना, यू देन विल हैव अ मोर बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अभी उतना समझ में नहीं भी आता है तो दैट इज वेरी नॉर्मल. आपने अगर पहले जीएसटी कभी सुना ही नहीं है ना, तो ये चीज नॉर्मल है. स्टेप बाय स्टेप. जीएसटी किस पे लगता है?
अभी अभी ये गलत सोच रहे हो तुम। जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स पे एंड सप्लाई ऑफ सर्विस पे, ना सिर्फ गुड्स पे, ना सिर्फ सप्लाई पे। हेलो, अगर गुड्स पे लग जाता ना तो फिर सप्लाई की जरूरत नहीं थी, वैसे सीधा लग जाता। तो सिर्फ गुड्स पे या सर्विस पे नहीं लगता है, सप्लाई ऑफ गुड्स पे, सप्लाई ऑफ सर्विस पे, और ना सिर्फ सप्लाई पे लगता है, इट हैज टू बी सप्लाई ऑफ ईदर गुड्स और अ सर्विस। एंड देयरफॉर this should be our entry gate to understand what is the GST, because GST is levied on supply of goods, and that is why we started with the understanding of the definition of the supply. Again, I'm sort of revising for you. And the moment we entered into the definition of the supply, we came across a terminology that supply includes, which is an inclusive terminology. और जब हम आगे और बढ़े, that supply includes all form of supply of goods और services, तो हमें पता चला कि सिर्फ सप्लाई कुछ काम का नहीं है, that supply has to be either of goods or of service. सप्लाई अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए हमें जाना पड़ा to understand the meaning of term goods. What is the meaning of goods? Where we understood that goods means, अच्छी बात है, means है यहाँ पे every kind of movable property, but it excludes other than money and securities, includes actionable claim and growing crops attached to the earth. We agree to serve before a supply, that is fine, but the growing crops is the key point. Hello, क्या था? Goods means every kind of movable property. So property, वहां पे हम थे कि property is not only a tangible terminology, and if you have a myth in your mind that whenever we are talking about goods, we are always talking about tangible things, so we have to remove that myth, because securities have been excluded means what? अदरवाइज इट वॉज इंक्लूडेड, तभी तो उसको एक्सक्लूड किया ना किसी चीज को। अभी मैं किसी को क्लास से बाहर निकालूं तो कब निकाल सकता हूं? जब वो क्लास के अंदर है, तब मैं उसको बाहर निकाल सकता हूं। अगर कोई बंदा अंदर है ही नहीं, उसको बाहर कैसे निकाल सकता हूं? सो ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन में आप वो लॉजिक समझो। एक्सक्लूड आप तब कर सकते हो विच अदरवाइज वॉज इंक्लूडेड इन द बेसिक डेफिनेशन। व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? तो बेसिक डेफिनेशन तो इतना ही है, सप्लाई मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो बेसिक डेफिनेशन था उसमें उसकी वजह से इंक्लूड हो जाता था, लेकिन गवर्नमेंट डोंट वांट टू इंक्लूड, देयरफॉर दे एक्सक्लूडेड। अदरवाइज इट वाज इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द जनरल डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन की वजह से। तो सिक्योरिटीज दो इंटेंजिबल आर गुड्स नॉट सर्विसेज, एंड देयरफॉर दे एक्सक्लूडेड। Am I clear? At the same time, actionable claims were included. Why? Because somewhere else it is written that actionable claims are neither supply of goods nor supply of service. But they are very clearly saying that it is a goods. लेकिन वहां पे अपने ध्यान से देखा तो क्या था? Actionable claim other than lottery, betting and gambling. So lottery, betting and gambling are actionable claim and are goods. हेलो, तो आप लॉटरी खरीद के ला रहे हो तो उस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस लगेगा, क्योंकि भले ही शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को निकाला, लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम को नहीं निकाला था। क्लियरली लिखा था what has been removed in schedule 3 is actionable claim other than lottery, betting and gamblings. So lottery, betting and gamblings are not excluded by schedule 3. At the same time, actionable claim has been included as a goods. So आप जब लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पे जीएसटी पे करोगे तो आप उसको क्या क्लासिफाई करोगे? सर्विस नहीं, गुड्स, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम इज डिफाइंड इन अ गुड्स। नॉर्मली लॉटरी कोई टेंजिबल चीज नहीं है ना, वो चलो आप एक पेपर लेके आते हो लॉटरी वाला, लेकिन वहां पे कोई टेंजिबल चीज नहीं मिल रही है, वो आपको राइट मिल रहा है कि आप अगर आप जीते तो आपको पैसा मिलेगा। सो बेसिकली दैट इज अ राइट विच इज गिवन टू यू, इट इज जस्ट अ राइट, नथिंग एल्स।
Am I clear? But still it is a goods. क्यों? क्योंकि goods means every kind of movable property. That right you can pass on to anyone. Movable property है वो. Property is nothing but a right. Hello? Property कुछ नहीं है, right ही है. Are you getting it? Sure. So that property, the only point which up till now we understood is goods does not means only tangible thing. That is the only point which I came across. Now we will understand term movable. What is the meaning of movability? What is the movability? Now understand. As I told you that in an earlier text law for an exercise, they never define the term goods. They never define the term goods. उसकी वजह से बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के रूलिंग आए और गुड्स को ही डिफाइन नहीं किया. तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉमनली एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर किसी आर्टिकल, मटेरियल, सब्सटेंस को गुड्स बोलना है तो उसके अंदर बेसिक 2 कैरेक्टर होने चाहिए, तब उसको हम गुड्स बोल सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का ये कंक्लूजन था फ्रॉम सो मेनी केसेस लाइक दिल्ली क्लॉथ मिल, OTIS एलिवेटर, दामोदर रोपवेज, सिरपुर पेपर मिल. एक पुराने केस लॉ है ये, जहां पे उनका कॉमन ऑब्जर्वेशन था, कॉमन कंक्लूजन था कि अगर किसी आर्टिकल, मटेरियल, सब्सटेंस, I cannot use the term goods को goods बोलना है तो इसलिए I'm using the term that if I need to classify any article, material or substance as goods, then such article, material, substance at least have these 2 characteristics. What 2? Movability and marketability. क्यों? क्योंकि आप किसी भी गुड्स को बनाते क्यों हो? किस लिए बनाते हो? बेचने के लिए. So marketability is utmost important. Marketability का मतलब क्या होता है? मार्केट में जाके बेचने की कैपेबिलिटी, वो गुड्स की खुद की बिकने की कैपेबिलिटी. कहां पे जाके? मार्केट में जाके खुद को बिकने की, बेचने की कैपेबिलिटी को बोलते हैं मार्केटेबिलिटी. लेकिन उसके लिए कहां जाना पड़ेगा? मार्केट में जाना पड़ेगा goods को. So for marketability, that means to go into the market, goods must have movability. तब तो मार्केट में जाएगा ना. Just take an example, just simply vegetable market. So these vegetables are coming over there for their sale. Yeah, any other shop where you are going. That every shop is nothing but a market. Goods are coming over there. If you cannot bring goods to that place, you won't be able to sell it. And if you cannot sell anything, what is the reason of classifying it as a goods? Because goods have been made for that purpose. So if you don't decide or define anything, no, then only 2 characteristics are important to classify any material, article, substance as a goods, and those 2 characters are movability and marketability. Am I clear? तो marketability तो by default है क्योंकि supply है. Supply itself is a marketability that you are supplying to someone. The remaining portion was movability, and that is what they brought here. And when you say that movability, then you need to understand movability as such from one place to another place. So just give an example. I'm giving an example. You need to say that whether that particular goods has movability character or not. Cycle, is it movable? Is it movable? Cycle is movable? Is it a goods? Motorcycle, is it movable? Is it a goods? Auto rickshaw, movable? Goods? Car, movable? Goods? Bus, movable? Goods? Train, movable or not?
Huh? Train is a goods or not? So let's keep aside. You are not firm. Boat. Boat which runs on a water. Is it movable? Is it goods? Irrespective of the size of the boat? Or it depends? When you say it depends, no, you have no understanding that means. Either it is goods, પેલું કોરોનાની અસર છે એના લીધે હોય કે ના હોય. ડિપેન્ડ્સ એવું કોઈ કહે ને ત્યારે સમજવાનું ખબર નથી. So boat, Titanic, chalo. Is it a goods or not? How many of you feel that a Titanic is a goods? Or any biggest ship of the world, is it a goods or not? Do you feel that it is a goods? So remaining say that it is not a goods. Fine. Helicopter, is it a goods? Yes. Airbus, is it a goods? Airbus मतलब plane. Is it a goods? So what is the problem with train? Train is a goods or not? Huh? Are you sure? Movability. Train is movable? Yes. So then it should be goods. Okay. Ropeway? Powergrid जाओ तो है ना उधर रोपवे. Ropeway? Is it a goods? Movable? Or not? Huh? अरे यार come on. हाँ कहना पर तुमने पैसा लगाया था नहीं. रोपवे इज जिसको पता है ना वो शांति से बैठो. रोपवे इज अ गुड्स. ट्रेन में बैठ के तुम जा रहे हो ना तो रोपवे में बैठ के नहीं जाओगे क्या? इज अ गुड्स और नॉट? नो. ओके फाइन. दिस लिफ्ट elevator, is it a goods? Is it movable or not? Ropeway is movable? Not. You said that ropeway is not movable, right? Or is it movable? Hello? Depends. Elevator. So if you see this sort of movability, then it is vertical. Ropeway has an horizontal movability. So the same principle of the train, boat, plane applies to this also. Rocket. Is it movable or not? Huh? No, this is a case law or a clarification has came on this. What was issue? That ISRO is launching a satellite on some contract basis for someone. So is it an interstate supply or intrastate supply? The supply has been made not to any other country also. अरे import export भी होता है ना तो हम सोच लेते हैं कि between two state और between two country तो भी हम उसको interstate मानते हैं. हेलो export और import इसीलिए तो है ना. Export import is an interstate. और within two state, within two union territory होता तो भी उसको हम interstate मानते हैं. ये तो कहीं गया ही नहीं है. इंडिया से निकला गया कहीं नहीं. It is in a space. तो उस पे था ये आएगा आप पढ़ेंगे आगे. So what is your conclusion about ropeways and elevator? Forget about it. Fan. This movability you are talking about, isn't it attached and immovable? Hello, isn't it an attached and immovable? It is attached. Okay, AC. AC in my office and AC in a chroma. Both are movable, or both are immovable, or this is immovable, that is movable. Uninstalled AC and this is installed AC.
both are movable, one is movable, another is immovable, or both are immovable? Okay. Why? See, understand? All the reason is to bring all such example is you need to understand when the first doubt came when we were discussing about the train. You must be thinking कि यार it work only on a track, so we have a limitation of movability. No, it is its functionality. Ceiling fan has its functionality. We cannot have a ceiling fan in our hand. Can we have it? It has to be attached somewhere, so that it has its functionality. Air condition has a functionality you need to attach. The light has a functionality you need to attach. A projector has a functionality to attach. For its a functionality, it does not make it immovable. So therefore, the train is movable, or any other mode of conveyance, this sort of is movable. But when it comes to the ropeway is a system. What is a ropeway? Ropeway is that cabin in which you are sitting. Is it a ropeway? That is just a cabinet. The whole system is a ropeway. Or when you talk about an elevator, is it the cabinet in which you are sitting is a lift? No, the whole system is a lift. So can you remove the ropeway of Pavagadh and fix it to Junagadh? Can you do that? No. If you want to do that, you have to destroy it. And the moment you destroy it, it loses the character of being called itself as a ropeway. जैसे आप उसको छोड़ोगे, खोलोगे, it loses a basic essential character of ropeway. It become a ropeway only when it is installed. Otherwise, it is not a ropeway. The fan is a fan, whether it's installed or not installed. It's a functionality while we are installing it. Otherwise, also it was a fan. The light was a light, whether you install or not installed. So if I remove the light from the ceiling, still is a light, no? But that is not the case with elevator. That is not the case with ropeway. Therefore, the ropeway and elevator, though have a functionality of moving, is not movable. And I'm coming back on an air conditioner. So you cannot decide on the basis of that air conditioner is always movable. No. Air conditioner is always not movable. This sort of air conditioners are movable, but the air conditioner system in Vadodara Central, is it movable? No. Answer is no. There is also an air conditioner, no? There will be also the compressors and everything will be fitted over there, but has been designed for a specific mall. You cannot take it to somewhere else. In the moment you're taking it, it loses the character of being called an air condition. So when the air condition whole as a system functions, it becomes an immovable. But when it's being sold as an individual product, then it is movable. So movability has to be verified in this way, that any article, material, substance should be movable as such. As such मतलब क्या? Without destroying. If you can move, then it is movability. Without destroying, it should not lose its basic essential character. So without losing basic essential character means what? Movable as such. Evu ne evu. If you can move, then it is movable. If you cannot, train is not a good child says. Train is a system, but engine and the coaches we are talking. Train is a system, but we are talking about an engine and the coaches, because every part has a separate function. So the engine and the coaches are obviously movable, but the train becomes a train when all the coaches and the engine are attached together, then it becomes a train. Are you getting it? Sure. So any factory, or you can say a turbine, electricity generating turbine, it becomes a turbine, turbo alternator. That is what they normally give a name, turbo alternator. So turbine and an alternator come together, function jointly, and then it generates electricity. तो ये जब दोनों साथ में काम करते हैं,
तब वो टर्बो अल्टरनेटर बनता है। तो आप उसको जैसे रिमूव करते हो तो इट लूजेस द कैरेक्टर ऑफ टर्बो अल्टरनेटर, सेपरेट टर्बाइन, सेपरेट अल्टरनेटर. So you, whenever you cannot remove any material, article, substance as such, then we can say that it has no movability. So movability has to be verified in an as such condition, and that is where this immovable properties like building, land has been kept outside the purview of definition of goods. Again, understand, goods means every kind of movable property, every kind of movable property. So please bear in mind, your property means a right. Hello, that right has to be movable. It may not be tangible, but it has to be movable, and all other movable article, material, tangible things are already included, but in addition to it, it also includes intangible rights on such movable product. Clear? So this is something which you have to keep in your mind. So this is a definition of goods. I do not want to फिर ना सीए में छोड़ने के बारे में सोचने लगोगे। ये तो सिर्फ गुड्स का डेफिनेशन स्टार्ट हो, सप्लाई का डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ गुड्स का डेफिनेशन है। फिर आएगा सर्विस का डेफिनेशन आएगा, फिर आएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, सोचा भी नहीं होगा कभी तुमने ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसिंग, लीजिंग एंड रेंटिंग, सब सेम ही लगता है ना, सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, बट इन अ लॉ देयर इज नथिंग कॉल्ड एज सिनोनिम्स. What is the meaning of consideration? What is the meaning of person? What is the meaning of furtherance of the business? ऐसे ही बोल्ड करके नहीं रखा है मैंने, दिख रहा है? अब देखोगे ना तो अंदर बोल्ड दिखेगा ये, consideration, person, furtherance of the business. ये हर एक जितने वर्ड हैं वो हर एक वर्ड का डेफिनेशन है, तो वो हर एक डेफिनेशन समझेंगे तब जाके सिर्फ 7-1 खत्म होगा. Am I clear? और इतना डिटेल में करेंगे ना फिर याद रखना तो कभी वो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि होगी डेफिनेशन 1 पेज की और हम डिस्कशन करेंगे 50 पेज का, तो आप कितना भी इवोपरेट करो तो 1 पेज इतना तो बचेगा. ठीक है, तो स्टॉप हियर फॉर द डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय.